Have you ever wondered why some students write offspring and myriad in their essays and still score band 6? Meanwhile, other student writes children and many and walks out with band 7.5. फर्क वोकैबलरी का नहीं है, फर्क वर्ड चॉइस का है। और आज मैं आपको 15 वर्ड्स दिखाऊंगी जो आपकी राइटिंग को बैंड 6 पे स्टक कर रहे हैं और एग्जैक्टली कैसे रिप्लेस करने हैं। जब आइल्स एग्जामिनर आपका ऐसे पढ़ रहा होता है ना, वो एक स्पेसिफिक चीज ढूंढ रहा होता है, नेचुरल इंग्लिश, ऑफस्प्रिंग, माइरेड, कमेंस। एग्जामिनर सोचता है ये स्टूडेंट नेचुरल इंग्लिश नहीं बोल रहा, ये वर्ड्स रट के आया है। और वोकैबुलरी स्कोर 6, मैक्सिमम 6.5, क्योंकि एग्जामिनर के लिए एक्यूरेट मैटर करता है, इम्प्रेसिव नहीं। रूल सिंपल है, अगर आपको स्टार्ट का मतलब 100% पता है और कमेंट्स का 80%, स्टार्ट यूज करो हर बार। एक्यूरेसी बीट्स कॉम्प्लेक्सिटी। चलो शुरू करते हैं ग्रुप ए से। पीपल वर्ड्स, ये वो वर्ड्स हैं जो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि एकेडमिक लगते हैं लेकिन एग्जामिनर को फेक लगते हैं। वर्ड 1, ऑफस्प्रिंग। डोंट राइट ऑफस्प्रिंग, राइट चिल्ड्रन। बैंड 6, parents should monitor the screen time of their offspring. Band 7 writes, parents should monitor the screen time of their children. Examiner thinks, offspring, are we talking about humans or animals? Word 2, individuals. Don't write individuals, write people. Band 6 writes, many individuals prefer working from home. Band 7 plus writes, many people prefer working from home. Examiner thinks, just say people. Word 3, don't write the underprivileged, write poor people. Band 6, the government should support the underprivileged. Band 7 plus writes, the government should support poor people. Examiner thinks underprivileged is vague. Poor people is direct and honest. Group B, size or importance words. Maximum students यहीं फंसते हैं. Word 4, don't write paramount, write important. Band 6 student writes education is of paramount importance for national development. Band 7 uses education is important for national development. Word 5, don't write myriad, use many. Band 6 writes there are a myriad of reasons for this trend. Band 7 plus writes there are many reasons for this trend. Examiner thinks showing off. Word 6, enormous. Don't write enormous. You can use big or large. Band 6, this has an enormous impact on the economy. Band 7 writes, this has a large impact on the economy. Examiner thinks, save enormous for the IELTS exam? No. Showing. Now group C, action words. ये सबसे कॉमन ट्रैप है IELTS राइटिंग टास्क 2 में. Word 7, instead of writing commence, you can write start. Band 6, students commence their university education at 18. Band 7 writes, students start university at 18. Examiner thinks nobody says commence in real life. Word 8, instead of writing endeavour, use try. Band 6 writes, governments should endeavour to reduce pollution. Band 7 writes, governments should try to reduce pollution. Examiner thinks endeavour is from 1850. This is IELTS. Word 9, acquire. Write get. Band 6, children acquire knowledge through experience. Band 7 plus student writes, children get knowledge through experience. Examiner thinks acquire is fine, get is natural. एक सेकंड रुकना, कमेंट में एक वर्ड बताओ, कौन सा फैंसी वर्ड आपने अपने लास्ट एसे में यूज किया था। बी ऑनेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप जानते हो। तो फाइनल मैसेज, फैंसी वर्ड्स आर नॉट इक्वल टू बैंड 7, नेचुरल वर्ड्स आर डेफिनेटली इक्वल टू बैंड 7 प्लस। ये 15 वर्ड्स अगर आप रिप्लेस कर दोगे, आपकी वोकैबुलरी बैंड 6 से डायरेक्टली बैंड 7 प्लस हो सकती है। तो फाइनल आप चाहते हो पूरी लिस्ट 50 fancy verses, natural word swaps with task 2 examples, कमेंट करो vocab। और कमेंट में एक वर्ड जरूर बताना जो आज से आप यूज करना बंद कर दोगे। लाइक करो अगर यूजफुल लगा, शेयर करो उस दोस्त के साथ जो अभी भी ऑफस्प्रिंग लिख रहा है, सब्सक्राइब करो हर वीक नई स्ट्रैटेजीज के लिए।